So first of all, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई after our last discussion. One of those times, it's actually one of those things कि जहाँ पे होता है ना कि लोग कई दफा a lot of people actually bet against their own teams. In Yeah. football it often happens कि जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैन है तो आप मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ हमेशा बेट करेंगे क्योंकि इट्स लाइक बेसिकली विनिंग स्ट्रेटजी कि हर तरफ से आप विन विन होती है कि आइदर तो आपको पैसे मिल जाएंगे, अगर ना हुआ तो चलिए आपकी टीम तो जीत गई है, तो उस तरह से आपको खुशी हो जाएगी. सो दैट्स आल्सो विनिंग स्ट्रेटजी. सो मैं भी उस तरह से सॉर्ट ऑफ सिचुएशन में कर रहा था. मैंने कहा चलें ठीक है, आधे तो मेरी प्रेडिक्शन सही हो जाएगी, ये तो टीम जीत जाएगी, चलो उसकी मुझे खुशी होगी अपनी जगह पे. तो दैट्स आल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई मैं इस तरह से प्रेडिक्ट यूजुअली करता हूं कि अच्छा हाँ यार लग रहा है कि पाकिस्तानी टीम जो है वो शायद हार जाएगी. ऑल्दो आई वुड से आई वाज वेरी सरप्राइज्ड दैट द मैच वाज अ लॉट मोर क्लोजर देन आई एक्सपेक्टेड. आई डोंट नो अबाउट यू. Yeah. Yeah. I've been saying this for a while, but like I said this like a billion times in our group, but like this felt like evenly matched teams, and I know like I see a lot of people on Facebook. Ab jaake I'm seeing like the people are actually not happy with the match. I didn't expect anyone to complain about the match, considering that I think we played pretty well. Like people are complaining about the batting, but I think batting to India ki bhi weak hai, and India ki kaun question karega batting, right? बिल्कुल. So like yeah, and like I think given the circumstances, they played pretty well. Ball बहुत swing कर रही थी, तेज बहुत आ रही थी, bounce बहुत हो रही थी. So it was a tricky pitch, and I think considering that it was a good inning. Like अभी मैं group में यही बोल रहा था कि why is Shoaib Akhtar of all people saying this? उसको दिख नहीं रहा कि घास है pitch पे. So it's a weird thing, but I'm very happy with the performance because I think batting, bowling दोनों में we gave it our all. So हाँ बिल्कुल. yeah, I think the only weak point would be the fielding. The fielding could have been better. I yeah, think plus the bowling may they were, I think Pakistan was not 100% there. They were a bit sloppy overall. Like they were probably playing at 80% or something. Okay, of course वही बात है कि batting wasn't 100% sharp. Bowling was good, but maybe not. The bowling was probably the strongest overall. I think उसमें कम weakness थी, लेकिन मसला ये आ रहा था कि wides और extras बहुत ज्यादा थे. Fewer extras अगर हो जाते तो वो भी था, catches कुछ थोड़े बेहतर पकड़ जाते. It was just like a marginal thing. 10% बॉलिंग बेहतर होती, 10% आपकी क्या कह सकते हैं बैटिंग बेहतर होती, या इवन फील्डिंग भी बेहतर होती. एनी ऑफ दोज थिंग्स अगर थोड़ा सा भी इंप्रूवमेंट आता तो आई थिंक इंडिया वुड हैव प्रोबब्ली लॉस्ट दिस गेम. एंड दिस इज समथिंग आई ब्रॉट अप इन द ग्रुप एज वेल कि यार आई थिंक the biggest thing for us is कि Pakistan, even though they didn't really perform to their peak and we could see that they weren't performing at their peak, India still struggled to beat us. और आखिर तक मतलब they needed genuinely great Hardik Pandya innings to get to the finish line. वो अगर ना yeah, होता तो इन्होंने फिर भी हार जाना था. Even though we could clearly see, like as Pakistani fans, that this Pakistani team is not firing on all cylinders. कभी ये 100% पे नहीं खेल रहे और इनको मतलब हर बंदा इंजर हो रहा है. ऊपर से फिर मतलब शामत अमाल आपकी लिटरली एंड पे जाके स्लो ओवर रेट की वजह से आप ये रिस्ट्रिक्शन भी लग जाती है कि अच्छा ठीक है फील्डर भी बाहर नहीं खड़े कर सकते. तो कंसिडर दैट एज वेल. तो मतलब there's like a huge list of things जो कि आप गिन सकते हैं. अच्छा ये भी अगेंस्ट गया, ये भी अगेंस्ट गया, ये भी गया, ये भी गया, एंड उसके बावजूद भी इंडिया को लिटरली हम आखिरी ओवर तक लास्ट लाइक 3-4 बॉलों तक ले गए थे. वो अगर ना होता तो they would have probably won the game easily enough I guess. अगर मतलब everything works for Pakistan so maybe they win by like 20 runs or 30 runs. नहीं हुआ जिस वजह से वो हार गए. But I think overall it was much closer game for us, and certainly for people like me and for you as well, who've actually gotten really used to seeing Pakistan kind of struggle against India and be outclassed by India since like the 2000s. उस टाइम पे पाकिस्तान टीम जो है तो लगता था कि बस जान का जोर लगा रही है, हारी जा रही है, हारी जा रही है. तो बहुत दफा होता था वर्ल्ड कप में खास तौर पे कि जी हमारी टीम जो है वो जा रही है और इंडिया ने आपको पकड़ लिया है, और फिर बीच में कोई बंदा जोर लगा के किस तरीके से एक बस ठीक है हमने बना लिया एक टोटल एक क्या कह सकते हैं एक बस इज्जत बचाने वाला टोटल सॉर्ट ऑफ एक बना लिया कि ठीक है जी हमने एक दे दिया, टारगेट दे दिया, अब उसके बाद हम देखेंगे हमारी बॉलिंग जो है क्या करेगी, और उसके बाद इंडियन बैट्समैन आएंगे और हमारे बॉलर्स को कुत्तों की तरह मार के फिर उसके बाद वो आराम से मैच जीत जाते हैं. तो ये तो हमने इतनी दफा देखा था. for a और ये जो while it आउट was just क्लासिंग Kohli. For a while it was just Kohli जो कि like मार रहा था. मैं हाँ मतलब to be very fair हम बिल्कुल. लोग और सबका आउट कर रहे थे, कोहली नहीं आउट हो रहा था. So एग्जैक्टली yeah, तो मतलब ओवरऑल भी मतलब आपका होता था कि आप जो है वो देयर वाज सम प्लेयर्स दैट यू कुडंट रियली टच ऑन द इंडियन साइड,
And even the way they were playing cricket, like they started playing modern cricket a lot faster than the Pakistani team. They were able to create much bigger scores. Their fielding had become a lot more standardized and of a much higher quality as well. हमारी टीम जो है बिल्कुल लग रहा था कि हम एक पुराने एरा का क्रिकेट खेल रहे हैं. हमारे प्लेयर्स भी पुराने एरा के ही हैं और कभी लगता नहीं था कि बस ये एक किस्मत हमारी होगी तो हम जीत जाएंगे. आफरीदी ने वो 2 छक्के मार के जिता दिया था फॉर एग्जांपल एशिया कप में इंडिया के खिलाफ. पर अगेन वही बात है कि किस्मत होगी या तुक्का लग जाएगा तो हम जीत जाएंगे. अदरवाइज वी डिडंट रियली हैव द मैन पावर टू बीट देम. या मतलब मैन टू मैन अगर हम देखेंगे तो वी कैंट रियली मैच अप टू देम. अब ये है कि मैन टू मैन वी कैन मैच देम अप. हमारे पास उस लेवल के प्लेयर्स हैं कि जो इंडिया को फेस अप कर सकते हैं और उस लेवल पे जाके उनको हरा भी सकते हैं. And even when they're not playing at our best, we can still compete with them. I think that for me is like the biggest thing. I mean, वो बात है कि we can't really set those kind of Australian standards for the Pakistani team. कि जहाँ पे हम कहें नहीं हमने हर सूरत में जीतना ही जीतना है, यहाँ पे नहीं होने वाला. हमारी टीम जो है वो उस तरह नहीं करेगी. Even if they're playing well, तो हम पता नहीं होगा हमारी टीम टूर्नामेंट जीतेगी कि नहीं जीतेगी. वो वाला सीन तो नहीं होने वाला. So उस हिसाब से we have to be a bit more circumspect. और उसके मुताबिक अगर मैं देखूँ तो I think they've done a really good job. They've competed well. They've made the match a lot tighter than we expected. Or even though things are going against them, they did not मतलब उन्होंने बिल्कुल हाथ पांव छोड़ नहीं दिए. वो फाइट करते रहे. मतलब बहुत दफा ये भी होता है ना कि हमारी टीम को जब उन्हें लगता है कि नहीं यार चीजें अगेंस्ट हमारे जा रही हैं तो बिल्कुल मतलब कहेंगे यार आज तो हमारा दिन ही नहीं, हमने कोशिश ही नहीं करनी. ये वाला एटीट्यूड भी हम देख चुके हैं. सो they didn't really do it this time. उन्होंने कहा नहीं हमने छोड़ना नहीं, हम लगे रहेंगे आखिर तक कुछ भी हो. Which is a good thing. I think ये भी एक अच्छी बात है. This will bode well for them in the longer run, at least going into the tournament. क्योंकि वही बात है. First match है, we will probably end up playing India 3 times, at least twice, unless Hong Kong has a surprise up its sleeve. I really don't know much about the Hong Kong team, honestly. But yeah, I don't think उसमें होगा. लेकिन चलें coming back to the match, forgetting the overall result. So, what do you think about क्या उसे कह सकते हैं the Rizwan innings? A lot of people were kind of criticizing that. Personally, मैं अपना opinion देता हूँ. I don't think it was such a bad innings. I know he didn't seem to be very fluid, but I think the innings was kind of indicative of the pitch as well. कि वो उसका बल्ला नहीं चल रहा था, ball उसके bat पे उस तरह से नहीं आ रही थी. He tried, he managed to stay there. I think he played some important runs and he made the best of a bad situation. What would you say about the innings? I think one of the things that I'm seeing is this contrast between like Kohli and like Rizwan. And I know there are people complaining about Rizwan, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि कोहली ने भी उतना बुरा खेला, but Kohli is getting praised for it. The thing is, I'll get to Rizwan, but Kohli का every ball जो बाकी सारे batsmen clearly struggle कर रहे थे. They were like good deliveries. Kohli was effortlessly smashing them away. And that was the scary part. I'm pretty glad that Kohli made like a reckless decision and got himself out. We didn't outplay him. He got himself out. ये बात तो पक्की है. And you could see that Kohli himself, even how class about he is, even he was struggling. And with Rizwan, and that's why I'm going to come to Rizwan and I'm connecting the two. Kohli and Babar have this ability to smash away good balls. This is not something you see in every T20 player. Rizwan is a great player, but he cannot smash away good balls. And एक reality face करने की जरूरत है कि India bowled really well. They bowled really well. And इतनी कसर नहीं छोड़ी. And उसकी वजह से it's actually pretty good कि Rizwan kept taking like single doubles and kept chipping away runs because the bowling wasn't doing him any favor. I don't know हमारी आदतें कहाँ से खराब हो गई. I think it's the IPL because IPL में pitches ऐसी होती हैं where it's considered a norm कि हम लोग 70-80 रन बना लें एकदम से 30 बॉलों पे, but that cannot realistically happen in every pitch, even in T20. Like I know there's a higher demand for cricket, but UAE की अगर आप pitches देखें, पूरा World Cup उठा लें पिछले साल का, like that was a more murrier pitch as compared to this one. पूरे World Cup में कोई भी ऐसी टीम नहीं थी जो 180 से ऊपर जा रही. It's just a really tough wicket, and considering that Rizwan played really well. Obviously वो struggle कर रहा था, उसको ball नहीं दिख रही थी. Luck was in his favor. ये बात तो मैं like you can't deny that, right? But once he got his groove and once he got like set at the crease, he smashed away pretty much like any ball that was like in his क्या कहते हैं in his area. And honestly,
हमारा इतना बड़ा टारगेट नहीं बनता अगर रिजवान इतना अच्छा नहीं खेलता। हमने 147 बनाया ना, तो 43 तो उसने बनाया। 100 रन, फिर 100 रन का टारगेट होता। So नहीं, like लेकिन आप you're forgetting the amazing contribution of Dhani as well जिसका मैंने इंटरेस्टिंगली मैंने उस बात में मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि धानी को मैं कह रहा था कि यार धानी को चांस मिलना चाहिए, चांस मिलना चाहिए। आई वाज नॉट थिंकिंग उसको बैटिंग में चांस मिलना चाहिए जिस चीज में उसने yeah, एक्चुअली परफॉर्म किया था। और द बॉलिंग वाज प्रीटी डिसेंट एज वेल, ही डिड अ रियली गुड जॉब विद द बॉलिंग एज वेल। लेकिन वो बात है कि यस, कमिंग इन लेट ही आल्सो एक्चुअली गॉट सम रियली क्विक रन। तो मैं वाकई मैं दुआ कर रहा था, मैं कह रहा यार इंडिया की टीम काश 12 रन से हारे ताकि हम कह सकें कि देखो धानी के 2 छक्कों ने जो है उसको हरा दिया था। आई रियली वांटेड दैट टू हैपन। ऐसा हुआ नहीं, लेकिन आई थिंक वेल प्लेड बाय द गाय। अमीर उसने आके आखिर में जो है वो बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली। एंड अगेन एज वी वर सेइंग बिफोर कि आपकी टीम ने आखिर तक फाइट करती रही इवन दो थिंग्स आर गोइंग अगेंस्ट देम। और बहुत नेगेटिविटी शदीद किस्म की मची हुई थी ड्यूरिंग द फर्स्ट इनिंग्स। जितने भी फैंस थे, मैं ट्विटर के ऊपर भी देख रहा था, उसको मॉनिटर कर रहा था, मैं रेडिट थ्रेड्स भी कर रहा था। आई डोंट नो इफ यू डू दैट एज वेल, बट फॉर मी दैट्स यूजुअली माय प्रोसेस ऑफ वाचिंग द गेम। कि एक तरफ मैं मैच देख रहा होता हूँ, एक तरफ मेरी नजर ट्विटर के ऊपर होती है, एक तरफ रेडिट की थ्रेड्स पे होती है, एक तरफ हमारे ग्रुप के ऊपर होती है। वो तीन तरफ मैंने नजर रखी होती है, साथ में पढ़ रहा होता हूँ, साथ में मैच का देख रहा होता हूँ कमेंट्री। तो उसमें काफी ज्यादा नेगेटिविटी जो है ना हर जगह मुझे नजर आ रही थी कि यार पाकिस्तानी इनिंग बहुत बकवास जा रही है, यही क्या हो रहा है, मर गए, लुट के बर्बाद हो गए टाइप, इस तरह से मतलब सूरत हाल बनी हुई थी। इवन दो एट नो पॉइंट आई थिंक, और फिर इंडिया वालों ने भी शुरू कर दिया था क्योंकि जैसे ही आई थिंक नसीम ने सेकंड विकेट दी थी, आई थिंक प्रॉब्ली सूर्य कुमार की विकेट थी, आई थिंक राइट, वो जो सूर्य कुमार, हाँ आई थिंक सूर्य कुमार की विकेट थी। that was a crucial तो wicket. हाँ, तो वो जो है उसके बाद इंडिया वाले बिल्कुल नेगेटिव हो गए थे। आई रिमेंबर द इंडियन फैंस जस्ट कंप्लीटली लूजिंग इट। उन्होंने कहा जी अब तो मैच हम हार जाएंगे, ये तो नहीं जीतने वाले, दैट इज गोइंग टू हैपन नाउ। तो वो फिर उनकी उनकी पीछे मतलब क्योंकि कॉन्स्टेंटली रोना पिटना डाला हुआ था दोनों साइड पे, आइदर पाकिस्तानी रो पिट रहे थे या इंडियन रो पिट रहे थे। किसी को भी ये नहीं लग रहा था एट एनी पॉइंट कि यार हम जीत जाएंगे मैच, क्योंकि आई थिंक इस पॉइंट Yeah, पे आके शायद इंडियंस की कॉन्फिडेंस भी थोड़ा शेक हुआ है। और पाकिस्तानियों को तो है ही, मतलब हम तो हमेशा रोना पिटना ही डालते हैं। हमारी तो पक्की आदत है, हमारा हमें तो तो पुरानी, trauma है ना। अब हमारे हमें तो 20 साल का जो ट्रॉमा है ना वो इतनी जल्दी उतरने नहीं वाला। तो वो तो मतलब अनलेस के इस मैच में भी हम कर जाते तो फिर शायद थोड़ा बहुत रिकवरी की तरफ हम जाना शुरू करते। लेकिन हमारा रोना पिटना जो है दैट्स जस्ट स्टेट ऑफ बीइंग अ पाकिस्तानी फैन, वो तो हर सूरत में हमारा होना ही होना था। सो आई थिंक दैट इन इटसेल्फ टेल्स यू कि मैच ओवरऑल क्लोज ही था, क्योंकि कोई भी फैन जो है ना कहीं किसी भी टाइम पे कॉन्फिडेंट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते कि यार हम जीत गए हैं या हम जीत जाएंगे। आखिरी बॉल तक सब मतलब सबकी जो है फटी हुई थी, किसी को कुछ लग Yeah, नहीं रहा था कि यार हम जीतेंगे। yeah. I do want to तो talk about something which is the slow overrate. Right? Oh, were you हाँ, speaking? ना ना, बोले बोले, आई वाज डन। Yeah. Slow overrate is ये जो नई penalty निकाली है, I think that's one of the most unfair rules जो कि like हाँ, has come out in मतलब recent ये क्या times. Like चीज़ है? you ये can't कैसे say क्या that, वैसे but ही like मतलब मुझे कुछ अंदाजा नहीं था। आई फाउंड आउट अबाउट दैट जब मैं उसकी कमेंट्री पढ़ रहा था, क्योंकि याद होगा ग्रुप पे मैंने कहा भाइयों मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ थ्रेड को ये बल्कि अपना जो इसका स्ट्रीम है वो बंद कर रहा हूँ और मैं अब ईएसपीएन पे जाके पढ़ूंगा उसे। क्योंकि जैसे ही मैंने लगाया तो आते साथ ही पहले बॉल पे जो है वो कोहली का कैच ड्रॉप हुआ और उसके बाद जो है वो उसने टांग पकड़ ली जो है रिजवान ने। मैंने कहा भाई मैं तो जा रहा हूँ सबकी मैच बचाने के लिए। मैंने कहा ठीक है ये तो कुछ बैड लक शुरू हो गई है, तो इसको छोड़ो दूसरी तरफ चलते हैं। तो मैं तो वहां निकल गया था अपने। तो बेसिकली जब मैंने क्या बात के बाद, सॉरी यार, just completely lost my train of thought। अभी इस पे किस पे बात करने वाले थे? What we were going to talk about? slow overrate, slow overrate. हाँ, सो ओवर रेट पे बात करते हुए जब वहां मैं देख रहा था थ्रेड को तो मेरी एकदम नजर पड़ी। मैंने कहा अच्छा जी, स्लो ओवर रेट, पाकिस्तान कैंट पुट फोर मोर देन फोर फील्डर्स आउटसाइड। मैंने कहा ये क्या बकवास है, व्हेन डिड Yeah, दिस हैपन? ये कौन सा नया रूल है? मुझे तभी पता चला इसके बारे में, क्योंकि आई न्यू अबाउट लाइक मैच yeah, फीस, और मैं तो बचपन से वो देख रहा था कि जी आपकी मैच फीस आपको पड़ती है या इस तरह का मसला हो जाता है। ये कब से बकवास शुरू हो गई कि स्लो ओवर रेट के बायस जो है वो आपका जो है वो फील्डर या बाहर नहीं रख पाएंगे, मतलब दिस वाज कंप्लीटली न्यू। और yeah. हमारे लिए ज्यादा बड़ा मसला था क्योंकि एक तो हमारे फास्ट बॉलर लंबे रन अप्स वाले, और ऊपर से जो है वो इंजरीज भी होगी। तो हर थोड़ी देर बाद बंदा, कभी एक बंदा टांग पकड़ के बैठा हुआ है तो दूसरा बंदा टांग पकड़ के बैठा हुआ है, एम्पायर ऊपर खड़े हुए हैं कि अच्छा ठीक है भैया खड़े हो जाओ ओवर कराना है, तुमने लेट हो रहे हैं सारे। तो अब वो मसला भी था। तो आई मीन या यू आर राइट। आई मीन एक तो ये नया कोई वो जब कहते हैं ना पंजाबी में उश्तल्ला छोड़ा है,
तो अब आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, लेकिन मतलब हमारे साथ काफ़ी बुरी होगी इस वजह से, क्योंकि अगेन अगर ये भी ना होता तो वी हैड अ प्रीटी गुड चांस ऑफ विनिंग एज़ वेल। कि वो जो पड़ गए ना 3 चौके हमें, 1 ओवर में 3 के 4 चौके थे, कितने पड़े थे उसको, हारिस राव को ही पड़े थे ना? वो जो एक अंडर ही जगह 19। मारे जा रहा था, आई हाँ, थिंक 2 हाँ। लगे थे, 2 उसको। नहीं 3 तो थे यार, एट लीस्ट 3। देयर वर एट लीस्ट या 3 फोर्स जो उसको पड़े थे, लेकिन वो मैं कह रहा हूँ कि अगर वो फॉर एग्जांपल हमारा बाउंड्री पे या उस तरह से ना होता तो अगेन देयर वाज़ अ चांस कि इतने चौके उसको ना पड़ते। हारिस राव इतना बुरा बॉलर भी नहीं है। तो अ, वही बात है कि अगर वो ना होता तो फिर भी चांस था। आखिरी ओवर में फिर ज़्यादा रन्स होते, प्रेशर बढ़ता, क्या पता या सिचुएशन कहाँ से चली जाती। बट वही बात है कि यस यू आर राइट, आई हैड नो आइडिया अबाउट दिस, और काफ़ी अनफेयर रूल मुझे लग रहा है। हमें तो खास तौर पे ज़्यादा लगेगा क्योंकि हमें चुभ रहा है इस टाइम पे, और ये पहले भी मसला बड़ा होता था। पाकिस्तान यूज्ड टू गेट सफर दिस अ लॉट। 90s में मुझे याद है जब स्पेशली ओडीआई मैचेस हुआ करते थे, तो बहुत दफ़ा पाकिस्तानी टीम स्लो ओवर इट, और हमेशा हमारे, क्योंकि वी मोस्टली हैड फास्ट बॉलर्स विद लॉन्गर रन अप्स, उस ज़माने में भी होता था। वकार करा रहा है, वसीम का फिर भी थोड़ा छोटा था, शोएब करा रहा है। बाकी भी अगर आपके बॉलर्स हैं तो वो भी सब लंबे रनअप्स वाले हुआ करते थे। सो मोस्टली वी वुड एंड अप हैविंग स्लोअर ओवर रेट्स, वैसे हमें यूजुअली ओवर्स डॉक किए जाते थे उस जमाने में, ये होता था। सो यू वुड बी डॉक्ड अ कपल ऑफ ओवर्स, सो पाकिस्तान वुड हैव टू चेस द टारगेट इन लाइक 48 ओवर्स इंस्टेड ऑफ 50 ओवर्स। तो हमारे साथ ये 90s में बड़ी बकवास हुई थी। उस वक्त भी स्लो ओवर रेट हमें काफी बुरी तरह काटता था, और अब तो काफी अरसे से नहीं हुआ, बड़े अरसे बाद स्लो ओवर रेट मुझे दोबारा से री इमर्ज होते हुए नजर आया। मतलब या बट आई हैव नॉट मिस्ड इट सिंस द 90s, क्योंकि यूजुअली हमें ही नुकसान उसका होता था, दूसरी टीमों को नहीं होता था। या एंड आई थिंक वो इश्यू सारा यही है कि लाइक ओके सो द रीजन फॉर लाइक स्लो ओवर रेट का रूल, बाय द वे इंडिया का भी स्लो ओवर रेट था, टाइम चेक कर लें। कम से कम आई थिंक 3 घंटे की इनिंग थी हमारी पाकिस्तान हम्म। की। इट वाज अच्छा। मोर देन यूजुअल। लाइक जो एवरेज है वो है 1 आवर 30 मिनट में हो जाता है। 2 घंटे, हाँ 2 घंटे लगे थे हमें कम से कम इनिंग खत्म करने में, तो आधा घंटा अच्छा। लेट तो इंडिया भी थी। सो द अच्छा। इशू इज कि आई कैन अंडरस्टैंड कि कमर्शियल रीजन है, राइट, कि आपको टीवी राइट्स मिलने में तो आपको लाइक प्रेशर होता है कि लाइक आपको 3 घंटे में मैच खत्म करना है। आई गेट दैट, राइट। एंड उस सेंस में इट इज फेयर अगर आप मैच खत्म होने के बाद पीएनलाइज करें, या आप हम्म। बैन लगा दें, या आप क्या कहते हैं क्या कहते हैं, या आप फाइन कर लें। इवन दो आई थिंक दिस होल थिंग इज स्टूपिड टू बिगिन विद, ठीक है। हम्म। कि लाइक दिस इज अ वेरी कैपिटलिस्टिक आइडिया कि मैच एक वक्त मतलब एक वक्त पे खत्म करना है और हम्म। वरना फाइन आ जाएगा। बट अगर आपको करना है तो आप मैच के बाद करें। जो आप मैच की क्वालिटी खराब कर रहे होते हैं ना बिकॉज ऑफ स्लो ओवर रेट, देयर इज नो सेंस इन दैट। बिकॉज हाँ। खास तौर पे टी20 गेम, इफ यू डूइंग इट इन ओडीआई, अगर आप ओडीआई में अगर आप बोल रहे हैं कि मतलब फील्डर को अंदर आना होगा, समझ आता है। बट लाइक विद टी20 व्हेन यू नो कि लास्ट ओवर्स क्रूशियल होते हैं एंड एक बैटिंग ओरिएंटेड कल्चर है, um if you have like if you're bringing in like 4 fielders, you are essentially gifting the other side the match. It's not fair. If any rule हाँ। is gifting the other side the match, it's not really like a rule that should be applied. um हाँ। so like again बिकॉज it's surreal and essentially हाँ, इट इज ब्रेकिंग द फेयरनेस ऑफ द गेम। और इट्स नॉट लाइक yeah अ प्रूवन फैक्ट कि आप कह रहे हैं कि जैसे दूसरी टीम ने अगर ज्यादा टाइम ले लिया है तो दे आर गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ एन एडवांटेज आउट ऑफ इट। देयर इज नो लाइक एविडेंस फॉर दैट एट ऑल, कि अगर जी हमने फॉर एग्जांपल वही ओवर जो हम फॉर एग्जांपल घंटे के अंदर करा सकते थे, वो हमने 1 घंटे 15 मिनट के अंदर अंदर कराए हैं अगर, तो उससे हमें कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा। या तो आप कहना जी वेर इवनिंग द ऑड्स, कि ठीक है जी आपने एक एडवांटेज ले लिया स्लो ओवर करवा के, और हम आपको एडवांटेज वापस दे रहे हैं दूसरी टीम को बाय रिस्ट्रिक्टिंग द नंबर ऑफ फील्डर्स, सो इट इवन्स आउट। ऐसा सीन भी कोई नहीं है कि ऐसा भी हमें पता हो कि अच्छा नहीं जी ये तो लाजमी हमें फायदा दे रहे हैं दूसरे को, कोई भी ऐसा फायदा नहीं होता। देयर इज नो एडवांटेज टू दैट, बारिंग मे बी द प्लेयर्स गेटिंग अ बिट मोर रेस्ट, बट अगेन दैट्स सच अ स्मॉल पॉइंट, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि उससे कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ रहा होता। जिसकी बेसिस मतलब दिस पर्टिकुलर थिंग इज मेकिंग अ ह्यूज डिफरेंस, और ये बहुत बड़ा वही बात है कि एट सम मतलब ऑलरेडी हमने एक दफा देख लिया है, ये जो कहते हैं ना ये एंड आगे मचेगा, इसकी वजह से इन रूल्स की वजह से काफी तमाशा भी बनेगा। अभी तो मतलब वही बात है, पार्टी भी शुरू हुई है। वी विल सी अ लॉट मोर प्रॉब्लम्स, और इवेंचुअली आई एम श्योर लोग जो है इसके बारे में और रौला शौला डालेंगे और इस रूल के बारे में बात होगी,
might eventually get changed as well, लेकिन अभी तो स्टार्ट हुआ है इसका काम. अभी तो पता नहीं कितने अरसा लगेगा इस चीज को eventually snowball करने में कि लोगों को realization होगी और फिर कहीं जाके we might get to a point where things might might start to change as well. तो अभी तो बहरहाल उसमें देखते हैं क्या होता है. So okay, coming back to the Pakistani bowling, I think क्या उसमें कह सकते हैं, I think we have to talk about Naseem Shah and his spell. But I think before we get to Naseem Shah, because that's like the obvious thing, I think we have to give props to Nawaz as well. So Nawaz से कोई expectation लोगों की नहीं थी और like constantly लोग stats फेंकी जा रहे थे. I remember कि जडेजा जो है उसका strike rate 140 plus है, 147 है against left armers, और मेरे ख्याल में जो सूर्य कुमार यादव का strike rate है like 170 plus against पता नहीं leg spinners or something. तो हमारे जो spinners हैं वो नहीं चलेंगे. ना शादाब ने रन खाए और नवाज ने 3 विकेटें भी निकाल ली and almost won us the game as well at the end. तो वही बात है कि नवाज was a big surprise for me. I didn't think कि वो उतना अच्छा perform करेगा as much as he did, लेकिन I was actually really impressed with his bowling. What do you think about what do you have to say about that, और आपने क्या ऐसी कोई interesting चीज observe की हो? Well, with Nawaz, I don't have much to say. I think it was a really good bowling, like sort of क्या कहते हैं display. I mean, not to like rain on his parade. I think जो उसने जडेजा की जो उसने विकेट ली थी क्रूशल थी, उसने एकदम से मैच बता दिया था, बिकॉज मुझे लग रहा था छक्के भरेंगे, वही फ्लैशबैक्स आना शुरू हो जाते हैं ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल के आखिरी ओवर में छक्के लगना शुरू हो गए स्पिनर को. तो आई मीन एंड में वही हुआ, बट लाइक इट्स एंड में छक्का ही हाँ या बात तो हुई. Yeah, but like I think भाई देखो, as I said before, विराट कोहली की विकेट तो उसने विराट कोहली ने फेंकी. I don't think Nawaz had a lot to do with it, right? He didn't need to play that shot, he did, and वो एक विकेट I would think के discount कर दें, but you know that how cricket goes, we don't really discount that. बॉलर की विकेट होती है. रोहित की was well deserved. रोहित से खेला नहीं जा रहा था, तो I mean it was good for him to get him out and he kept it tight. सबसे बड़ी बात ये है, तो he didn't give away a lot of runs. उसने I think उसने जडेजा का मैं देख रहा था, उसने उसका वीक पॉइंट निकाल दिया था, उसको बार बार ना टांगों पे कराया जा रहा था उसको. आई थिंक चूंकि जडेजा या फिर ऑफ साइड पे खेलता है या फिर ऊपर मारता है सामने की तरफ, तो उसको बार बार वो लेग पे कराया जा रहा था और उससे वो नहीं खेली जा रही थी, तो वो ही वाज जस्ट टेकिंग सिंगल डबल्स. सो दैट वाज प्रीटी इंटेलिजेंट बॉलिंग इन माय ओपिनियन. It was honestly very boring to be like because मैच एकदम से रुक गया था उसकी वजह से, लेकिन from a tactical perspective it makes sense. Naseem Shah, I think we've been talking about this in the group a lot. He is Waqar Younis's protege, and he's been groomed by him for a long time. It's his like, मतलब क्या कहते हैं, test tube baby. I guess I don't know the right term for him, but it's his baby, right? And अब वो दिख रही. I think जो उसने bowling कराई है, जिस तरह की उसने bowling कराई है, that was very reminiscent of the type of bowling Waqar Younis used to do, because it was straight at the stumps, wicket उड़ रही है, and like क्या कहते हैं, ball and honestly, when you can barely run, you're still pulling at 145. It's amazing. Like it's not easy, but he still somehow managed to do it. I don't know उसने कहाँ से हिम्मत निकाली, but वो clearly भागा नहीं जा रहा था, उससे चला नहीं जा रहा था, but you're still clocking 145 plus, and that was something. Okay. I would raise a few points here based on what you said. So एक तो ये चीज के वकार यूनुस का, I mean I'm sure वकार यूनुस को groom किया होगा, but I mean I remember seeing Waqar, and you might have seen the compilations of early Waqar. He is not like early Waqar. Waqar was very different, in the sense that Waqar was probably faster and Waqar was a much fuller. He was always targeting the stumps, लेकिन वही बात है कि Waqar would end up at the stumps after starting maybe like a foot or two outside the off stump and then curving the ball in. So uska ye tha ki no one can swing the ball like Waqar. Obviously Naseem cannot swing the ball. He basically is a seam bowler with a decent amount of pace. He does seem, surprisingly for me, a lot faster than he actually is. Like बहुत दफा उसकी बॉल आएगी, आप कहेंगे वो 150 पे करा रहा है, it's actually like 142. That's always very interesting for me. He's a lot more slippery than you would expect. Like वो उतना fast है नहीं जितना वो लगता है. I don't know क्या चीज है. There's something about certain bowlers कि वो they always appear a lot faster than they actually are. I don't know उनकी length पे चक्कर होता है या maybe the way they release the ball, जिसकी वजह से ball लगता है कि वो ज़्यादा जल्दी आ रही है. It seems to hurry the batsman up. Actual pace है उतनी नहीं होती,
जितना उनको लग रहा होता है, लाइक ही सीम्स लाइक अ 150 बॉलर। जब वो आता है और भागता है, जिस तरह उसका रन अप है, जिस तरह उसकी रिलीज है, जिस तरह से बैट्समैन का रिएक्शन भी होता है, जो जिस तरह से कर रहे होते हैं, यू फील लाइक ही इज मे बी अराउंड 150 बट ही इज यूजुअली क्लोज टू 140 एंड 145 इज प्रीटी फास्ट, लाइक प्लेंटी फास्ट होता है 145 इफ यू मूविंग द बॉल इवन अ लिटिल बिट। So he's fast enough. He's Yeah, definitely fast it's enough. But he always appears a lot faster. I don't know क्या चक्कर है. There's something about the way he either releases the ball या क्या वजह है, but हमेशा the batsman is always a lot is pretty hurried when they're trying to play. And वही बात है. Even I remember this interview, but दो बार की interviews में थे. I don't know if you know the guy Rehanul Haq. yeah. He's currently general manager of Islamabad United. तो उसने भी इसके बारे में बात की थी कि he said कि नसीम शाह को जितने लोग भी फॉलो कर रहे हैं, who've been seeing him from like before under 19 level से उसको देख रहे हैं, under 14 level से देख रहे हैं, उन्होंने basically he said कि every one of them said कि this guy will definitely become a world class bowler barring some sort of a major injury. Injury अगर नहीं होता तो this guy is destined to be a world class bowler. And Yeah. वही बात है कि he is kind of proving that करंटली कि वो उस चीज के ऊपर आ रहा है कि हाँ वाकई अगर उसको इंजरी नहीं होती या कोई सीरियस किस्म का मसला उसको नहीं होता, साइबिन हसनैन का भी था, लाइक हसनैन भी अगर फॉर एग्जांपल उसको वो एक्शन वाला मसला ना होता तो ही वाज आल्सो ऑन ट्रैक टू बी अ वर्ल्ड क्लास बॉलर, ऑलरेडी वो उस तरह से परफॉर्म कर रहा था। लेकिन नसीम का तो आई थिंक प्रॉब्ली लोगों को ज्यादा था, इवन लाइक नसीम का स्टार्ट वाज मच स्लोअर, लाइक आई वेंट बैक एंड आई सॉ सम स्टैट्स फॉर क्या नाम है अपना शाहीन अफरीदी। लाइक माय अजम्पशन वाज एटलीस्ट होता है कि तो आपकी मेमोरी में चीज रह जाती है, मैंने अज्यूम करा था कि शाहीन अफरीदी हैड अ वेरी स्लो स्टार्ट उसके लिए, लाइक फर्स्ट ईयर वो उतना अच्छा नहीं था कि पहले साल उसने देखो खास परफॉर्म नहीं किया या, बट wasn't really the case. He was pretty decent from the start. He just went from like good to amazing. Like शुरू में शायद Yeah. मे भी थोड़ा बहुत ऑफ लगता था या कभी कभार उसने थोड़े से हल्के फुल्के कमजोर ओवर करवाए थे, लेकिन आई मीन ही जस्ट वाज रियली गुड, लाइक उसकी एवरेज में भी 26 से 21 पे चली गई, बट इवन 26 की एवरेज 26 की एवरेज इज प्रीटी डार्न गुड। तो वही बात है कि वो बिल्कुल शुरू से आया था एंड ही वाज लाइक ऑन द मनी। नसीम टुक अ वायर। नसीम मेरे ख्याल से अब कितनी टीम से में तकरीबन पिछले कोई 1-2 साल से तो है, आई थिंक ही इज बीन इन एंड अराउंड द 2019 नेशनल से टीम। कब से? 2019 में उसने दिसंबर में डेब्यू किया था। आमिर की हाँ रिप्लेसमेंट थी ना ये। अच्छा हाँ बिल्कुल। सो बेसिकली 2 साल तो उसको हो गए हैं, लाइक इज बीन अराउंड फॉर 2 इयर्स। तो वही बात है कि अब आके मेरे ख्याल से पिछले कुछ महीनों में मैं कहूँगा आई थिंक ही इज एक्चुअली स्टार्टिंग टू शो हिज पोटेंशियल, लाइक द लास्ट 4 or 5 months से हमें लगना शुरू है कि अच्छा हाँ इज एक्चुअली प्रीटी डिसेंट बॉलर। लाइक आई रिमेंबर एवरीवन बीइंग क्वाइट एक्साइटेड अबाउट हिज आई थिंक टेस्ट डेब्यू जो उसने ऑस्ट्रेलिया में किया था, और उसने बड़ा अच्छा स्पेल कराया था स्टार्ट में, बट ही डिडंट रियली पिक अप एनी विकेट्स एंड डिडंट रियली लुक कंसिस्टेंटली डेंजरस। लेकिन अभी वो सीख रहा था, इट टुक हिम अ व्हाइल टू गेट टू दैट लेवल, और आई थिंक अब आके शायद वो फाइनली उस पोटेंशियल को उसने हिट करना शुरू कर दिया जो बहुत से लोग एक्सपेक्टेशन उसकी लेके बैठे हुए थे। We will see how he does, and we will also see के how injuries affect him as well. कि वो बात है ऑलरेडी इस मैच के दौरान भी उसको एक इंजरी हो गई थी, although he's not the only person we can blame for that, a lot of other players got injured as well, लेकिन वो बात है कि we have to keep an eye on that as well कि कितना लंबा अरसा वो बगैर इंजरी खेल सकता है। Like one of the frustrations with, and I mean I was there to witness it with Shoaib Akhtar for example, कि Shoaib Akhtar, I think I only remember him playing consistently between the years of 97 to 99. इन 2 सालों Yeah. के अलावा शोएब अख्तर शायद ही कभी खेला हो जब वो इंजर्ड ना हुआ हो। हर वक्त उसकी इंजरी चल रही होती थी। साल में शायद बेयरली आधे टाइम के लिए वो हमें हमें अवेलेबल होता 2-3 महीनों के लिए, और फिर उसके बाद फिर इंजर हो जाता। व्हिच इज फ्रस्ट्रेटिंग बिकॉज़ जब वो खेलता था और जब वो उसको फिटनेस होती थी थोड़ी बहुत, तो ही वुड हैव लाइक दीस अमेजिंग स्पेल्स जहाँ पे वो पूरी की पूरी अगली टीम को उड़ा के रख देता था, और फिर उसके बाद वो टांग पकड़ चला जाता और फिर वो 6 महीने के लिए गायब हो जाता। फिर उसके बाद उसके एक्शन का मसला शुरू हो गया, कभी क्या मतलब देयर वर अदर प्रॉब्लम्स एज़ वेल। बट इट्स ऑलवेज फ्रस्ट्रेटिंग टू हैव अ बॉलर जो को पता है कि यार बहुत अमेजिंग बॉलर है लेकिन वो कभी खेलता ही नहीं है। सो होपिंग दैट ही स्टेज फिट, क्योंकि वो बात है कि आई रिमेंबर देयर वाज दिस डिस्कशन, आई एम वेरी सरप्राइज्ड बाय दैट ऑन आई थिंक द क्रिकेट पॉडकास्ट, और उसमें उन्होंने दे हैड द पीपी फेसेस पेस यार का उन्होंने किया था, रियूनियन करवा रहे थे। सो समवन मेंशन्ड द फैक्ट कि पाकिस्तान has not had a
a test bowler go above 200 test wickets since Waqar Yunus. A lot of people are surprised by that. Even Shoaib Akhtar does not have 200 wickets in test cricket. No one does actually so far. Since that time, since Waqar Yunus, we've not had another bowler go above 200 test wickets. Not even 300 test wickets. 200. Fast, कोई भी bowler, like no bowler. Not fast bowler तो definitely नहीं. I think no other bowler actually has, like even check करें, सिद्ध अजमल ने भी 200 विकेट नहीं दी. I'm pretty certain. नहीं, यासिर शाह तो हो गया ना? हाँ, यासिर शाह, no fast bowler, sorry, no fast bowler has gone above 200 test wickets. उसके बाद से कोई भी बंदा either वो आए तो इंजर हो गए या इतना लंबा अरसा खेले नहीं. ना उमर गुल ने 200 विकेट ली, ना शुभ अख्तर ने 200 विकेट ली, which was very surprising for me because I thought he definitely had 200 wickets. उसके अलावा कौन आपके बंदे उस जमाने आए थे? There was no other bowler that I think वहाब रियाज ने तो कभी 200 विकेट नहीं लेनी थी, ना राहत नहीं लेनी थी, ना इवन जो बीच में दूसरा भी आया था, बट मतलब गाइस नहीं, मोहम्मद क्या उसका नाम था यार, दैट मोहम्मद आसिफ की चाइना कॉपी क्या उसका नाम था, टेस्ट बॉल. He was really good though, like उसने काफी विकेट निकाली थी, like with an average of 20-21 or something at one point. एकदम मेरे दिमाग से नाम ही निकल गया. सुहेल खान अगर उसको खिला देते तो हम शायद वो पहुंच जाते. सुहेल खान में टैलेंट है वो टेस्ट में, टेस्ट लेवल. सुहेल खान, हाँ मे बी सुहेल खान, बट अभी उसकी एज का मसला होगा ना फिर. Yeah, I mean he's a wasted talent now, लेकिन I think अगर उसको खिला लेते तो कर लेता. हाँ मे बी उसको हो सकता था, लेकिन हाँ वहाब को काफी अरसा हमने खिलाया था, लेकिन वहाब ने भी उतनी विकेटें नहीं निकाली थी. वहाब वाज अ डिसेंट बॉलर बट नॉट अ ग्रेट, लाइक ही वाज लाइक 30-35 के बीच में उसकी एवरेज थी, सो नॉट दैट इफेक्टिव. वही बात है कि अभी शाहीन भी 99 पे आकर रुक गया बाय द वे, क्योंकि उसको इंजरी हुई है, सो ही गॉट देयर प्रीटी फास्ट, बट वो भी 99 पे आकर एकदम फर्स्ट को भी फुल स्टॉप लग गया. आई होप उसका भी कोई मसला इतना सीरियस ना बने, लेकिन दैट वाज अ ह्यूज सरप्राइज फॉर मी सर्टेनली, फॉर अ नेशन दैट्स लाइक वेरी प्राउड ऑफ प्रोड्यूसिंग फास्ट बॉलर्स. और हमें बड़ा होता है कि यार हमने बड़े जबरदस्त किस्म के निकाले हुए हैं, लेकिन वो बात है कि वकार यूनिस की रिटायरमेंट 2003 में हुई थी, or it's been 20 years since and we've not had one bowler go past, or not one fast bowler go past 200 since that point. अच्छा एक तो चले ये बात भी है, आई एग्री कि हम टेस्ट मैचेस भी कम खेलते हैं, लेकिन वही बात है कि that's not perhaps enough of an excuse and no one has played a long enough period of time to be able to get 200 wickets. इतनी कंसिस्टेंसी नहीं रही, इतने लंबे अरसे के लिए कोई टीम में नहीं रहा, एटलीस्ट कोई फास्ट बॉलर इतने लंबे अरसे नहीं रहा कि जिसकी वजह से वो इतनी विकेटें निकाल ले. क्योंकि एक जमाने में वही बात है, व्यूअर्स को स्पॉइल्ड फॉर इट, कि हमें लगता था यार 200 विकेट तो कुछ भी नहीं है, 300 तो जाएगा तो हम कहेंगे वो वाकई अच्छा बॉलर है, क्योंकि उस जमाने में वकार वसीम की आदत थी 90s में और 2000 में, तो हमें आदत पड़ी हुई थी, तो हमारे स्टैंडर्ड बिल्कुल डिफरेंट थे. हमें लगता था यार बंदे की बॉलिंग एवरेज जो है ना वो 20-22 के दरमियान होगी तभी वो अच्छा बॉलर होगा. अब हम कहते हैं यार जब कोई 25-26 वाला भी है तो बहुत बात है यार, दैट्स प्लेंटी. इतना नीचे किसी की एवरेज नहीं होने वाली, क्योंकि उन्होंने वाकई हमारी आदतें बहुत खराब की हुई थी. ये बड़ा होता है ना, जब एकदम आपको कोई बड़ी जनरेशनल किसी में टैलेंट मिल जाते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा ही स्क्यू हो जाती है एक डायरेक्शन में, एंड जब उसके बाद वो रिटायरमेंट होती है फिर आप थोड़े ज्यादा ना जमीन पे वापस आते हैं, आपको थोड़ा अंदाजा होता है नहीं ठीक है, हर दफा ऐसे नहीं होता, और ऐसे लोग बार बार नहीं आते. लाइक इवन विद शाहीन, you know, it's he is a generational talent in the way that there are very few left arm tall quicks who can swing the ball. बहुत रेयर टैलेंट है. कितने आपको मिलेंगे दुनिया में, कितने हैं? सिर्फ आई थिंक स्टार्क है, मे बी मिशेल स्टार्क है. Pat Cummins, I mean he's right arm, but left में स्टार्क ही है मेरे ख्याल से. It's Stark and Stark. Who else? There's not really anyone else I can think of. Okay, left armer है जो स्विंग को बॉल करता है और इस तरह से स्पेस पे बॉलिंग कराता है. It's वो मैं कह रहा हूँ बहुत एक रेयर किस्म की एबिलिटी है. बहुत कम ही बॉलर हैं जो कि उस तरह के आपको दुनिया में मिलते हैं, लेट अलोन पाकिस्तान में. तो वो बात है. इवन लाइक विद बाबर का भी हमें पता है कि अब बाबर जाएगा तो उस लेवल का बैट्समैन हमें नहीं मिलने वाला दोबारा. जैसे बाबर भी एक ही बंदा था जो आया. मैंने इससे पहले we've seen good batsmen, but इतना dominant player एटलीस्ट एक पर्टिकुलर क्या कह सकते हैं फॉर्मेट के अंदर फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम हमने नहीं देखा. लाइक ओडीआई में एक बंदा 60 की एवरेज से खेल रहा है. लाइक वी हैड गुड प्लेयर्स, बट अगर आप देखें तो अभी एक्चुअली आई सॉ वेरी इंटरेस्टिंग स्टैट जो मैं खुद ही देख रहा था इसमें ओडीआईज में. आई लुक एट लाइक हाईएस्ट ओडीआई एवरेजेस फॉर पाकिस्तानी
batsmen. And turns out कि हमारी I think top 5 में जो हैं 3 बैट्समैन हैं जो कि पिछले मेरे ख्याल में 10 साल में खेले. So it's Imam, it's Babar and it's Fakhar. So they're in the top 5. Yeah. Or they're playing together actually. So consider how rare that is. कि आपकी ODI हिस्ट्री के 3 बेस्ट प्लेयर्स या हाईएस्ट एवरेज वाले जो हैं वो अभी करंटली खेल रहे हैं एक टीम में. So I mean that's pretty exceptional as well. और वही बात है कि जब ये जाएंगे तो उसके बाद आपको उस तरह का टैलेंट जो है प्रॉब्ली दोबारा नहीं मिलने वाला. So चलें बहुत एक लंबा एक क्या कहते हैं रैंट और साइड पे हम निकल गए, डायरेक्शन में चले गए. So I'll just bring it back to the game and I just want to kind of conclude that, but conclusion से पहले मैं ये बात करना चाहूँगा about the Indian side and the Indian batting effort first of all. उसके बारे में बात करना चाहेंगे कि you know how did you see the Indian batting? I think थोड़ा बहुत हमने touch upon किया था when you talked about the Pakistani batting, but I think how did you see the general overall? आपको लगा कि did they bat well according to the pitch? Did they make bad decisions? How did you see their batting coming along? So I mentioned this before as well, but I'll say this in quite some detail. I don't think हमारी टीम काफी अच्छी हो गई, and I think हम इंडिया के टक्कर पे आ गए. But I think we are far from being a side that can bowl out India की lineup, right? Because I think हुआ ये कि पिछले साल जो हम जीते हैं, पिछले साल हम इसलिए जीते हैं क्योंकि वो बैटिंग फर्स्ट कर रहे थे, वो टारगेट दे रहे थे. हम फिर भी उनकी सारी विकेट नहीं ले पाए. So we were in a position to go into the second innings and bat well, and I mean we batted phenomenally, but like we were in a position to not have to ball them all out or ball very good at them, and still win the match. Abhi, I remember you saying that like Hardik ne match jitwa diya. What we're forgetting is that we have Dinesh Karthik, who is in the form of his life. If you have seen him in the IPL, or perhaps you've heard about him, he's been playing like dangerously. 200 के strike rate पे वो IPL में था, strike कर रहा था. So like that's lethal stuff, right? So I remember when Jadeja out हुआ, I was like अब कार्तिक आ जाएगा, कार्तिक मारेगा, तो फायदा, right? So we are not a side in my opinion as of yet जो इंडिया के बैटिंग लाइनअप को खत्म कर सकती है. हम इंग्लैंड का खत्म कर सकते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया का भी खत्म कर सकते हैं, साउथ अफ्रीका भी कर सकते हैं. These are like the other best T20 teams, right, with really good batting lineups. We do have that potential, but India is on another level. Because if you look at their batting depth, it's not even like batting depth तो हमारी भी है, but हमारी batting depth तो like होती है कि हाँ इसको बल्ला पकड़ना आता है, इसको भी बल्ला पकड़ना आता है, तो 7वें 8वें नंबर पे करे जाते हैं. But with India उनको ना सिर्फ बल्ला पकड़ना आता है, उनको छक्का मारना भी आता है और consistently मारना. And I don't know DK के बाद कौन था, but like I think एक और बैट्समैन तो था इनके पास और. But regardless, we have Kohli who's back. I really liked how Kohli played. I cannot get over that. I don't know if you've seen like the Amazon वाली जो test documentary थी ऑस्ट्रेलिया की जो थी. Have you seen it? नहीं, I haven't seen it. I'll show you like that. There's a scene that जो YouTube पे भी काफी viral हो गया था, where they had this whole clip of Virat Kohli being shown as this super villain, where he just walks into the screen, walks into the like the pitch, and everyone there, there's like a silence because everyone knows कि अब game खत्म हो गया. Because the way he plays, जो dominance उसकी है, I remember Tim Payne का एक quote है कि like you just have to stop at one point and just go like wow. And that's the sort of player that he is. And जो कल उसने बैटिंग की वो ऐसा ही लग रहा था, because the sort of shots that he was playing under the conditions of the pitch, पहली बार जिंदगी में वो पुल कर रहा है, तो he's changing something up. The pulls were very good, and he looked very relaxed, and he looked like he was a class apart from every other batsman in the match. Every other batsman. Babar, I realized this. मैं सोच रहा था अभी कि बाबर भी struggle कर रहा था, like before getting out obviously, but he was also struggling under this pitch. And to be fair, Virat was also struggling, but he didn't feel like they were going to budge him. Obviously एक drop catch था, and he still has a long way to go in terms of
a comeback, but जो उसने खेला है वो बहुत जबरदस्त खेला है. Obviously, there's always that what if कि वो कैच पकड़ा जाता तो क्या होता. Maybe his confidence उसने rebuild किया 1 महीने से वो shatter हो जाता. But I think उसके बाद उसने अपने आप को बिल्कुल अच्छा like carry किया है, काफी अच्छा carry किया है. And I think जो मैं इसको T20 में notice कर रहा हूँ ना, because I've been watching his every single match जो खेल रहा है ever since his downfall. He's playing well T20 में. T20 में issue ये है कि कुछ ज्यादा ही hit कर रहा है. And eventually gets out. इसकी एवरेज की इफेक्ट भी नहीं हुई. Like I went back and checked his averages and ODIs and tests. So tests और ODIs में तो like काफी नीचे चली गई है उसकी average from where he normally was. But T20 में it actually got better. या उसकी अपनी एवरेज आइदर उसने मेंटेन की हुई थी या उससे थोड़ी बेहतर हो गई थी. Like he's still not he's still actually pretty consistent in T20s. It's just the ODI form and the test form that's completely abandoned him. Yeah, and I think मैंने वही देखा है कि like जो like इंग्लैंड वाली सीरीज थी इसमें आई थिंक 7 T20 के 3 खेले थे, राइट. उन सब में it was just him I think being irresponsible. हर बॉल मारनी है, हर बॉल पे like वो रॉक स्टार लगे. And I think I it's think also eventually that was like if you there was an interview as well. पता नहीं आपने देखा था कि नहीं. Like I remember किसी ने मुझे बताया था इसके बारे में कि there was a recent interview of Kohli where he was talking about depression and the kind yeah of mental pressure that he was in. इसकी वजह से मतलब काफी डाउन रहा था पिछले 1-2 सालों में. तो आई थिंक वो चीज है. ऑब्वियसली मेंटली ही इज नॉट देयर वेयर ही यूज्ड टू बी. even if के वही बात है कि बहुत हद तक cricket becomes like a mental game as well. Even if he gets the technique back, if he's mentally not in the right space, तो बहुत दफा he will make those kind of decisions. वो rash decisions बनाएगा जहाँ पे हो सकता है एक बॉल को जहाँ पे वो लीव कर देता, मे बी इन लाइक अर्ली एज years वहाँ पे उसको जाके हिट करने की कोशिश करेगा. तो yeah वो चीजें होती हैं. इट हैपेंस. लाइक वही बात है कि जब आपके ऊपर वो बुरा वक्त आता है तो फिर हर चीज ही एवरीथिंग स्टार्ट्स यू नो गोइंग अगेंस्ट यू. तो वो एक चीज भी है कोहली के लिए. बट आई मीन आई डू थिंक के T20s में ही स्टिल मे बी नॉट द फोर्स दैट ही यूज्ड टू बी, जहाँ पे वो आउट ही नहीं होता था और वो बस वो yeah आता था टूर्नामेंट के शुरू में और टूर्नामेंट के एंड तक वो नॉट आउट रहता था. कई बार ऐसा भी बहुत दफा हो चुका है टूर्नामेंट्स में कि जहाँ पे कोहली आउट ही नहीं होता था पूरे के पूरे टूर्नामेंट में. लिटरली ये भी हम देख चुके हैं. तो उस yeah लेवल की फॉर्म शायद नहीं रही. बट स्टिल आई मीन वही बात है कि आई थिंक ही स्टिल वाज ही द हाईएस्ट रन स्कोरर इन द इंडियन इनिंग्स और जस्ट बिहाइंड हार्दिक पांड्या मे बी. I don't remember because जडेजा का like 30s में स्कोर था तो I think हाँ. उसने थोड़ा exceed कर दिया. But I mean हम्म, top 2 में तो था ये कम से कम. हाँ So फॉर श्योर. and again 30 is a big deal in T20. I've हाँ वही mentioned this बात है. before. और But पाकिस्तान के लिए मतलब वही बात है कि आपकी रिजवान की जो इनिंग्स थी that was crucial as well. So his 30 something was actually quite crucial for yeah that chase. I think वो बात एक हमारे माइंड में रहनी चाहिए कि even though technically he wasn't there at the end, and you know maybe he's not the same Kohli जो कि वही बात है कि मैच शुरू से लेकर आखिर तक लेके चला जाता था, but he's still better than a lot of other batsmen and he's still a very effective player. वही बात है कि उसका अपना लेवल it's like the Ronaldo Messi effect कि यहाँ पे रोनाल्डो और मेसी जो है हर साल 60 गोल मार 60 गोल्स मार रहे थे for about you know maybe 7-8 years straight. और सडनली वो एक सीजन में 30 गोल मारेगा, आप कहेंगे यार तो बहुत कम हो गया है. जबकि 30 goals in a yeah season is amazing. How many people can score yeah 30 goals in a season? तो उसके लिए फिर yeah ये बात है कि आपका क्या उसे कहते हैं कि यू नो एक स्टैंडर्ड आपने इतना इम्पॉसिबली हाई सेट कर दिया है. वो क्या कहते हैं विक्टिम ऑफ योर ओन सक्सेस वाली बात है. तो कोहली इज अ विक्टिम ऑफ yeah हिज ओन सक्सेस. वो इतना ज्यादा रन, इतनी इम्पॉसिबल किस्म की चीजें उतने सालों के लिए करता रहे कि अब वो एक बस एक नॉर्मल सी अच्छी इनिंग्स खेलेगा तो आप कहेंगे नहीं यार मजा नहीं आया. तो वो वाला yeah मसला भी है कोहली के yeah साथ. But yeah, I think given if you ask me to, I think given the circumstances, India did okay-ish. But वही बात है कि I think their batting either you know made some bad decisions in between. But I think वही बात है कि पाकिस्तानी bowling भी अच्छी थी. उन्होंने जिस तरह से इंडिया की bowling ने हमें फंसा के रखा, हमारी bowling ने उनको फंसा के रखा. It was a case yeah of the bowling kind of dominating really good or very relatively strong batting lineups. तो पाकिस्तान की भी इतनी कमजोर नहीं है बैटिंग लाइनअप और इंडिया की इज डेफिनेटली स्ट्रांग. बट अगेन हमारी बॉलिंग लाइनअप इज प्रॉब्ली स्लाइटली बेटर देन देयर्स. तो वो उस तरह से भी हमने उसको थोड़ा इवन आउट कर लिया था ऑलमोस्ट उस चीज को. बट या आई थिंक sort of like final thoughts on the game. क्या आपके हैं like you know what was your overall impression? so I was thinking, and I shouldn't laugh at this. I hope whatever like mental illness that like Kohli is going through, he finds his way through it.
but I was thinking कि I think he was like mentally stable. फिर एकदम से उसने YouTube पे आसिफ की clip देखी bottom hand वाली. Then he was like, yeah, I'm a bottom hand player. मैं कैसे खेलूंगा? हमें कुछ पता नहीं कि वो जो आउट हुआ था ना, उसने गलत डिसीजन लिया. उस गलत डिसीजन पहले आप देखें, क्राउड में कैमरा जाएगा और वहां पे देखें आसिफ नजर आएगा, वो करेगा. उसे गुस्सा आया, उसने वो शॉट फजूल से मार के नवाज के अगेंस्ट वो आउट हो गया. तो मुझे लगता है कुछ ऐसा हुआ होगा प्रोबेबली. तो बेसिकली हाँ, तो आई मीन फाइनल थॉट्स आपके ये हैं कि आसिफ ने जो है वो अपना भरपूर किरदार अदा किया कोहली का दिमाग खराब करने में. So I mean, if you ask me, final thoughts वही है जो I think start में भी उसी की sort of elaboration ही है कि I think much closer match than I anticipated. मेरा ख्याल था कि शायद पाकिस्तान ये मैच थोड़ा बुरे तरीके से हारेगा because I felt like कि they weren't on form, and actually that part I was right about. They weren't completely on form. Pakistani team probably अपने 80% जो है capacity पे खेल रही थी, maybe 70-80% capacity पे खेल रही थी. But the surprising thing and maybe somewhat encouraging thing for me is that even at 70-80% capacity, India had to really struggle to beat us. So वही बात है कि I think as long as Pakistan finds its form and over time जो है वो मतलब अपने जो है I think might just be like a bit of ring rust जो हम कहते हैं, वो चीज़ भी हो सकती है कि शायद थोड़ा सा उनको खेलने की जरूरत है या थोड़े हाई लेवल पे कंपेटिटिव गेम, क्योंकि वही बात है पिछले मैच कौन से आपने नेदरलैंड्स के खिलाफ खेले थे. So again, even though they were relatively closer matches, but वो पाकिस्तान टीम के लिए I think were not necessarily great preparation. अभी यहाँ पे टूर्नामेंट लेवल पे आप आएंगे, वही बात है, इसी वजह से आप देखेंगे हर बंदा इंजर भी हो रहा था कि वही बात है कि you weren't really match fit. वो एक स्ट्रेस भी आपको अफेक्ट करना शुरू कर देता है. I think over time as they like stay in the tournament and they play longer, I think the Pakistan team will get better as they go along. और वही बात है कि I think if they are at this level right now, I think over time towards जब वो टूर्नामेंट के एंड तक पहुंच जाते हैं और कोई अनफॉर्चुनेट हमारा इस तरह का रिजल्ट नहीं आता जो हमें नॉकआउट कर दे, I think they still have a very good chance of winning the tournament at the very least. And I think if they play India again, I think India might not get away with it next time around. I think अगली दफा अगर इनकी परफॉर्मेंस जो है, which I expect will probably go up a couple of notches, I think by that time Pakistan can probably get a victory against them. But yeah, I think overall it was still an encouraging game. I wish they had won. लेकिन I think overall इसको काफी सीखने का मौका मिलेगा, and I think in that sense, in a way, इंडिया वालों को थोड़ी बहुत confidence तो मिलेगा, but in a way they would also be a bit shaken कि यार मतलब you know they weren't really playing well, but we still had to kind of struggle. We didn't really get like an easy game out of this despite everything. तो वो थोड़ा सा उनको भी जरा ख्याल करना पड़ेगा. They will have to get, and I think Pakistan need to tactically figure out a way to get क्या नाम है अपना not Jadeja, the other guy. एक तो अब for some reason I keep forgetting his name. क्या नाम है उसका? Hardik Pandya. Yes, Hardik Pandya. They need to figure out. They need to figure a way around Hardik Pandya. I think that will be very important for us the next game. क्योंकि I think उसको figure out करना, उसकी bowling और उसकी batting को हमारी बहुत जरूरी है. Once if we figure that out, I think हमारी टीम के लिए अगला मैच जो है वो जितना काफी we can actually win it relatively easily. But I think if we don't figure him out, तो वो हमें constantly फंसाए रखेगा. So that's something they have to kind of figure out in a hurry. क्योंकि टाइम इतना है नहीं इनके पास, टूर्नामेंट चल रहा है अभी, तो उसके दौरान ऑन द फ्लाई नहीं करना पड़ेगा. चलो ठीक है यार, had a lot of fun. And just by the way, I do have genuine final thoughts because I was just messing around as well. So one thing I was wondering, Abhi, which is we can see that in terms of bowling we evened out. Even in the sense कि उनका हमारा शाइन गया, उनका बुमराह गया, उसके बावजूद it was a tough bowling context. अब I think जो real मुकाबला होगा, that would be one to watch, and I think that would be equally as thrilling as this one would be the World Cup match, because अभी तो एशिया कप में तो हम कुछ नहीं करने वाले, ये बात तो पक्की है, because हमारी टीम ही इंजर्ड है, उनकी टीम भी इतनी फिट नहीं है. So like in the World Cup, hopefully we'll have Shine back, we'll have our full pace bowling attack, और फिर आगे से उनका बुमराह भी होगा, and hopefully maybe they should bring Shami back in. IPL में उसने perform किया, it doesn't make sense to permanently retire him from the T20 internationals. But in terms, तो like ऑस्ट्रेलिया की बहुत तेज विकेटें,
उसमें आई थिंक यही सेम कॉन्टेक्स्ट रिपीट होगा. इट वुड बी अ बॉलिंग गेम. बैट्समैन इतना कुछ कर नहीं पाएंगे बिकॉज टैलेंट बॉलिंग का दोनों साइड से बहुत भरा हुआ है. एंड आई थिंक इट वुड बी a nightmare for the batsman, but like a very thrilling match because of that. So yeah, and it will probably come down to the bowling and the fielding probably. कौन सी टीम पे फील्डिंग कर रही होगी on the day. So वो हाँ देखने वाली चीज. I think that will be quite interesting as well. चलो ठीक है यार. Let's wrap it up and let's hope के we can put this recording up. Hopefully download हो जाए. ठीक है. चलें. Okay यार. See you. Okay.